everyone, my name is Akhil and I welcome all of you to my YouTube channel Amazing Paramedical. As this is my first video in this channel, so let me give you a brief introduction about my YouTube channel. In this channel, you will find videos that are completely based on medical subjects, the subjects such as anatomy, physiology, biochemistry, microbiology, and so on. The videos that I'll be uploading will be very much helpful for the paramedical students, BSc Nursing, GNM, BHMS, and some other medical courses as well. I'll be explaining the topics by using English, Hindi, Urdu languages. And for my Kannada speaking students, I'll explain the same topic again in a different video by using Kannada language. So let's begin with today's topic. So students, today's topic is our blood physiology. In this video, I'll explain you about the definition, properties and composition of the blood. Okay, so first let's start with the definition of blood. Blood is a specialized connective tissue consisting of a fluid matrix, plasma and formed elements. Students, you must be wondering why we are calling blood as a tissue. As tissues, they will have a particular shape or structure which will form an organ. That organ will fit in a particular region of our body, right? But blood, it doesn't fit in any part of our body. It keeps on flowing throughout our body, right? But still we are calling it as a tissue. Why? Because of the presence of the formed elements, right? The formed elements are nothing but the blood cells, the cells that are present inside our blood. Okay, then there is presence of cells, then this blood should have some particular structure or shape, right? But still it is present in liquid form, or it is not having any shape. It is all because of the presence of a fluid matrix, that is plasma. Okay, plasma is the liquid portion of our blood, due to which our blood is present in liquid form. Okay, so because of this plasma, our blood is able to travel from one end of the body to the other end. ब्लड क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि दो चीज़ों से मिलकर बना होता है. एक फ्लूइड मैट्रिक्स जो कि प्लाज्मा होता है, और दूसरी चीज़ वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ओके, सो ब्लड को हम टिश्यू करके क्यों बुला रहे हैं, जबकि टिश्यू का एक पर्टिकुलर शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है. बट ब्लड का तो किसी भी तरह का शेप नहीं होता है, ना ही इसका कोई स्ट्रक्चर होता है, बट स्टिल हम इसको टिश्यू करके बुला रहे हैं. क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर क्या पाए जाते हैं? हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो कि ब्लड सेल्स देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पे अगर ब्लड सेल्स है इस ब्लड के अंदर, तो इसका कोई शेप होना चाहिए. फिर भी इसका शेप क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो पहला हिस्सा होता है वो होता है फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा. ओके, इस प्लाज्मा की वजह से ही हमारा ब्लड लिक्विड स्टेट में मौजूद होता है हमारी बॉडी में. इस लिक्विड स्टेट की वजह से ही हमारा ब्लड हमारे बॉडी के एक हिस्से से और एक हिस्से तक आसानी से सर्कुलेट होता है. सो ये है ब्लड का डेफिनेशन. आई होप सब लोगों को ब्लड का डेफिनेशन क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ है. सो अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं. तो ब्लड हमारे बॉडी में एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है. ट्रांसपोर्टर का काम करता है मतलब क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ये कई सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में, एक एंड से और एक एंड तक. जो ये सबसे पहली चीज़ जो ये ट्रांसपोर्ट करता है वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स. जो न्यूट्रिएंट्स जो हम डाइट से लेते हैं, ओके, जो हम खाने में लेते हैं, जैसे कि वो विटामिन्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं. ओके, ये न्यूट्रिएंट्स हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके ब्लड के अंदर मिक्स होंगे. ये ब्लड इन न्यूट्रिएंट्स को कैरी करके कहाँ लेके जाएगा? टिश्यूज़ के पास लेके जाएगा, जहाँ इन न्यूट्रिएंट्स को वो टिश्यूज़ ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे. ये होता है इसका पहला ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन. सेकेंड चीज़ ये क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? वो रेस्पिरेटरी गैसेस. ओके, रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन,
और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, लंग्स से ऑक्सीजन को उठाएगा और कहाँ तक लेके जाएगा? टिश्यूज़ के पास लेके जाएगा। टिश्यूज़ के पास से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा, कहाँ लेके जाएगा? उसको लंग्स के पास लेके जाएगा। ठीक है, ये होता है इसका दूसरा फंक्शन। और तीसरा ये ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या करता है? वो होता है एक्सक्रीटरी पार्ट को ये ट्रांसपोर्ट करता है। एक्सक्रीटरी वेस्ट, जैसे कि जो भी टिश्यूज़ जो मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट करेंगे, ओके, जो भी वो एनर्जी जनरेट करने के बाद जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट जो जनरेट होगा, वो वेस्ट को भी हमारा ब्लड क्या करेगा? उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के पास कैरी करेगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जैसे कि किडनी हो सकते हैं, लिवर हो सकता है, ओके, या स्किन हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ तक उसको कैरी करेगा। ये होता है इसका तीसरा मेन फंक्शन। और फोर्थ मेन फंक्शन क्या होता है और क्या ट्रांसपोर्ट कर सकता है हमारा ब्लड? वो होते हैं हमारे हार्मोन्स और एंजाइम्स, ओके, जैसे कि केमिकल मैसेंजर्स हो सकते हैं। ओके, सो इन सबको ये कैरी करने का काम करता है। ओके, सो द मेजर फंक्शन of our blood is transportation. Okay, so the nutrients that we take in through diet, that nutrients are absorbed through our intestines, they get mixed in the blood, and the blood will carry those nutrients to the tissues. The tissues will use those nutrients for the growth and development. Okay, that is the first major function. The second transportation work it does is the transportation of respiratory gases. Okay, blood carries oxygen from our lungs to our tissues. Just like that only, it will carry the carbon dioxide from our tissues to our lungs. Okay, that is the transportation of respiratory gases. That is the second major function. The third function is transportation of excretory part. Okay, the tissues, after generating the energy, they will produce some metabolic waste. That metabolic waste is again carried by our blood to our excretory organs. For example, our kidneys. Okay, that is a third major function. The fourth major function is transportation of hormones and enzymes. Okay, so blood plays a vital role in transporting the hormones from our glands to our tissues or organs. Okay, the example can be thyroid hormones or pituitary hormones. Okay, so these are the some major functions of our blood. Okay, so the next part is properties of blood. Okay, the first major property of our blood is color. Okay, color of our blood. Okay, so in our body the blood is present in two colors. The first color is scarlet red, the second color is purple red. Okay, the scarlet red blood is nothing but that is our arterial blood, the blood that is present inside our arteries, which we can also call it as oxygenated blood. Okay, the blood which is containing oxygen, purely oxygen. Okay, the second type of color, that is purple red color, that is nothing but our venous blood. Okay, which we can also call it as deoxygenated blood. Okay, in which there is no presence of oxygen but there is presence of carbon dioxide and some waste. Okay, that is the first property. Okay, so पहली property क्या होती है ब्लड की? वो होता है कलर। हमारे बॉडी में ब्लड दो कलर में मौजूद है, वो होता है, एक होता है स्कारलेट रेड, द सेकंड होता है पर्पल रेड। ओके, स्कारलेट रेड ब्लड जो होता है वो कहाँ पे होगा? वो हमारे आर्टरीज में होगा, जिसकी वजह से उसको हम आर्ट्रियल ब्लड कह के बुलाएंगे। ओके, जिसके अंदर प्योरली ऑक्सीजन का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकेंड टाइप का जो कलर होता है वो होता है पर्पल रेड। ओके, ये पर्पल रेड में क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है बट इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट देखने को मिलता है। ओके, सो ये होती है पहली प्रॉपर्टी, कलर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ अवर ब्लड इज वॉल्यूम. Okay, in normal adult, that is in male, we can find the normal volume of blood is 5 liters,
whereas in females we can find it as 4.5 liters. Okay, that is mainly because of the menstrual cycle and all, in which the females lose some part of their blood, so which is why the quantity will vary in 4.5 liters. Okay, in newborn babies the normal volume of blood, it will be somewhere around 450 ml. As the baby starts growing, as the baby enters into the puberty and all, then the quantity will change. ओके, सो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है ब्लड की, वो होता है वॉल्यूम ऑफ आवर ब्लड, या क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में, नॉर्मल कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है एक नॉर्मल इंसान में, या नॉर्मल मेल में, या नॉर्मल फीमेल में. नॉर्मल मेल में 5 लीटर्स देखने को मिलेगा और नॉर्मल फीमेल में 4.5 लीटर्स ब्लड देखने को मिल सकता है. एक न्यू बॉर्न बेबी में, एक बच्चे में हम लोगों को 450 ml का ब्लड देखने को मिलेगा. ठीक है. The third property of blood is pH. Okay, pH, that is nothing but pH कितना होगा, pH कितना होगा ब्लड का, नॉर्मली दैट विल बी समवेयर अराउंड 7.4 रहेगा, जो कि एक स्लाइटली अल्कलाइन या स्लाइटली बेसिक pH होता है. ओके, द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ अवर ब्लड इज विस्कोसिटी और थिकनेस. ओके, सो द ब्लड इज 5 times more thicker than water. Okay, it is 5 times more thicker than water. Why it is more thicker than water? Because of the presence of the formed elements and proteins. Okay, so blood का thickness कितना होगा, ये वाटर से भी 5 गुना ज़्यादा थिकर होता है. क्यों इतना ज़्यादा, कैसे थिकर हो सकता है वाटर से भी? क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को फॉर्म्ड एलिमेंट्स और सम प्रोटीन्स देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड वाटर से भी 5 गुना ज़्यादा थिक होता है. ओके, yes, these are the some properties of our blood. Okay, so the next part is the composition of blood. Okay, so the blood is composed of 2 major components. That is, first one is plasma, that is the fluid portion of our blood. The second one is the formed elements, those are your blood cells. Okay, the blood cells such as red blood cells, RBCs, are also known as erythrocytes. White blood cells, WBCs, that are also known as leukocytes. Platelets are also known as thrombocytes. Okay, so next part क्या है, composition है. composition of blood 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है. पहली चीज़ होती है प्लाज्मा, जो कि फ्लूइड पोर्शन होता है हमारे ब्लड का. दूसरी चीज़ होती है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो कि ब्लड सेल्स होते हैं. ओके, ब्लड सेल्स जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम RBC और एरिथ्रोसाइट्स करके भी बुलाते हैं. दूसरी सेल होती है वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम WBC और ल्यूकोसाइट्स करके भी बुलाते हैं. तीसरा सेल जो होता है प्लेटलेट्स, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स करके भी बुलाते हैं. ओके, सो in my next upcoming video, I'll be discussing in detail about the plasma and plasma proteins, which is the most expected question, 5 marks question for your physiology and biochemistry exam as well. Okay, so please make sure that you don't miss that upcoming video. Okay, if there are any errors, or if there are any corrections you need, okay, so please give your feedback in comment section so that I can improvise it in my next video. Okay, so please do subscribe to my channel. Keep sharing, keep learning. Thank you.